Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. Assalamu alaikum. This is Adnan Ahmed from Excellence Online platform. In last video we discussed about time management. Time management is a vast topic. It has different subtopics. Right now we are discussing time management and its one subtopic, waste of time. If we do not know about how we waste our time, in which activity we waste our time, we cannot understand the importance of time. If we want to manage our time, we must know where we use our time uselessly. We use our time without any productivity. We use our time without any professional learning. Right? So we are discussing right now management of time, how to manage our time. Is first segment is waste of time, where we waste our time. See, for example, we have the useless and irrelevant activity which have nothing to do with our professional or academic learning. Right? These activities we should leave, we should not spend our time. These activities are productive ways. We do not produce, we do not learn, we do not get anything in this point of view. One side we have academic and professional learning, other we have learning which do not link with our learnings which do not link with our profession or with our academic. So we should avoid this kind of learning. Though we have got social, domestic, national, different kinds of learning, but right now we are discussing our professional and academic learning. Next is like example we have engineering students. If they watch National Geographic or Animal Planet, they are not using their time appropriately, they are wasting their time. Why? Because this kind of information no one will ask them, they will not use in academic or professional life. Time management के बारे में डिस्कस करना है, उसके डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, डिफरेंट सब टॉपिक्स होते हैं, उनमें से एक क्या आता है, हाउ डू वी वेस्ट आवर टाइम. टाइम हम वेस्ट कहाँ पे करते हैं? अगर हमें इसके बारे में नहीं मालूम टाइम वेस्ट कहाँ पे कर रहे हैं, हमें टाइम इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम नहीं मालूम हो सकता, टाइम मैनेजमेंट भी समझ नहीं आएगा. सो वेस्ट ऑफ टाइम ऐसे तमाम एक्टिविटीज़ जिससे हमारा प्रोफेशन और एकेडमिक लर्निंग नहीं होती है, तो वो हमारे वेस्ट ऑफ टाइम में ही आते हैं. अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, वो मेडिकल साइंसेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, नेशनल ज्योग्राफिक देख रहे हैं, ऐसे वीडियोज़ देख रहे हैं जहाँ पे मेडिकल साइंसेस के बारे में है, और दिस इज़ नॉट प्रोडक्टिव टाइम. दे आर नॉट यूजिंग देयर टाइम अप्रोप्रिएटली, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम. ये जो लर्निंग है प्रोफेशनल लर्निंग नहीं है. Time is very short, they must manage their time. First we have professional learning. Number second, a waste of time. According to one report, right, in Pakistan it was a research, most of our teenagers, they spent 4 hours on social media or on cell phone against 24 hours. In 24 hours they spent at least 4 hours in social media or electronic communication. Only 1 hour is productive. 3 hours are useless, in useless activity. एक रिसर्च हुई थी पाकिस्तान में, उसके मुताबिक पाकिस्तान में जितने भी टीनेजर्स हैं वो अपना टाइम जो होता है 4 आवर्स अगेंस्ट 24 आवर्स, 24 आवर्स में से 1 डे में से 4 आवर्स तो सोशल मीडिया या सेल फोन को यूज़ करते हैं. इससे ज़्यादा भी यूज़ करते हैं, बट एवरेज हम यूज़ कर लेते हैं. उनके 3 आवर्स जो होते हैं वो यूजलेस एक्टिविटी में होते हैं. दे डू नॉट एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन, क्रिएशन, लर्निंग, नो एकेडमिक और प्रोफेशनल लर्निंग. जो उनसे फीड वाली लर्निंग होती है वो यूज़ नहीं करते हैं. सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मोस्ट ऑफ आर टीनेजर्स दे यूज़ फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस. जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल मीडिया का वो एंटरटेनिंग होता है. राइट ना, ऑब्जेक्टिव नहीं होता, प्रोफेशनल नहीं होएगा, एकेडमिक नहीं होएगा, यूज़ कर सकते हैं. जी कन्वर्ट योर एंटरटेनमेंट फैक्टर टूवर्ड्स एजुकेशन. जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक यूज़ कर रहे हैं, टेलीविज़न यूज़ कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, इसको कन्वर्ट करने से आप एजुकेशन में कन्वर्ट करते हैं. वॉच, यूज़, अप्लाई सोशल मीडिया फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, फॉर क्रिएशन, फॉर लर्निंग, फॉर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल लर्निंग. Number next we have, as we have discussed here, focus on professional and academic learning. Right now I have discussed, we have different kinds of learning. One of them is professional learning. आपका मेडिकल साइंसेज है या इंजीनियरिंग साइंसेज है या मीडिया साइंसेज है, या आपका प्रोफेशन है. आप फोकस ऑन प्रोफेशन. जो एक्टिविटीज़ आपके मीडिया साइंसेस में इंजीनियरिंग साइंसेस से लिंक करते हैं, आपने इसको फोकस करना है.
sports, dramas, movies, television, right? Maybe for less time to just get your mind fresh, you can use. But for regular basis, अगर movies देख रहे हैं, मैचेस देख रहे हैं, आपकी हैबिट बन जाएगी, इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, आपका टाइम इसमें जाएगा. आप किसी भी मैच में मीडिया साइंसेस के बारे में डिस्कस कम करते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स के बारे में नहीं करते. आपने PSL को ज्वाइन करना है, स्पोर्ट्समैन बनना है, क्रिकेटर बनना है, आप PSL देखेंगे, दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर यू. बट यू वांट बी इंजीनियर, फॉर इंजीनियरिंग राइट, उसमें कोई बेनिफिट नहीं होएगा. फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज वी कैन यूज़, बट मोस्ट ऑफ पीपल दे get ready for these matches for 4 hours, even for whole night, for 5 hours. On daily basis they watch these kind of things. उनकी ये प्रोफेशनल लर्निंग नहीं खिलाएगी. इसको मिनिमाइज़ करेंगे आप लोग. मूवीज़ देख रहे हैं, ड्रामास देख रहे हैं, टॉक शो देख रहे हैं, उसमें आपकी एकेडमिक या प्रोफेशनल लर्निंग नहीं हो रही, सोशल लर्निंग हो सकती है. बट राइट नाउ यू नीड ए प्रोफेशनल लर्निंग, एकेडमिक लर्निंग. उसको मिनिमाइज़ करें, इसको मैक्सिमम करेंगे आप. Number second, waste of time. We have a different example. One of them is wedding ceremonies in Pakistan. Wedding ceremony, winter vacations and summer vacation. In wedding ceremony in Pakistan and India, most of our families they take off of 1 week before their family wedding ceremony. 1 week is means 168 hours. 168 hours they do nothing with their profession and academic. स्टडी नहीं करते, ऑफिस वर्क नहीं करेंगे. कुछ फैमिलीज पाकिस्तान में ऐसी हैं जो 1 वीक ऑफ ले लेती हैं, और 1 वीक में वेडिंग सेरेमनी के लिए दे हैव नथिंग टू डू विद एनी वर्क, बट दे वेस्ट देयर टाइम इन gossip other activities. 60 days of summer vacation least productive. Most of our students, most of our Pakistanis 60 days summer vacation जो होते हैं वो उनके लेस प्रोडक्टिव होते हैं, लर्निंग नहीं होती है. वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्निंग. आप विजिट कर सकते हैं, ट्रैवलिंग करेंगे, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट सेशन में बच्चा परफॉर्म कर सकते हैं. नीदर दे विजिट नॉट द स्टडी, दे वेस्ट देयर टाइम ओनली इन रेस्ट. जी अप्रोक्सीमेटली 50 Sundays in a year, only useless rest. Yearly 365 days, and 365 days we have 48 to 55 Sundays कहलाते हैं. As we discussed in last video, we discussed 48 to 55 Sundays. Right? We do not study. In one day we have 6 parts and a day. Early morning, dawn period, morning, evening, afternoon, night. These 6 are 2 parts you can take rest. 1 part, 3 parts, but remaining part you can study. You can do your work. These all are the activity. These activities reflect we do not have time management. In fact, how can we have a time management if we do not know the waste of time and its activities? जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी आपके नॉर्म्स होते हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है, जस्ट फोकस, ट्राई टू रिमूव, मिनिमाइज़ करें से, और प्रोडक्टिव बनाएं जहाँ पे आपका प्रोफेशन है. जो आपका प्रोफेशन है उससे जो भी एक्टिविटीज़ लिंक करती हैं उसकी वर्कशॉप अटेंड करें, सेमिनार पे जाएं, एग्जीबिशन पे जाएं, क्लासेस लेंगे, रिसर्च करें, मीडिया साइंसेस पे जाएं, सोशल मीडिया पे जाएं, अपने प्रोफेशन के लिए, अपने एकेडमिक करियर के लिए. वो टाइम का ऐसा यूज़ कहलाएगा. जी आफ्टर एग्जाम्स we have different example regarding time management. One is after exams. After exams we have 15 days or 20 days. In 15 days or 20 days after each semester, most of the candidates they do nothing. They do not get preparation for next semester, or if they have any kind of other project they do not do. उनके जो भी रिमेनिंग वर्क्स हैं राइट उस पर काम कर लें, ऐसा भी नहीं है. वो उनके टाइम वेस्ट हो जाता है, प्लान करते हैं और प्लान नहीं कर पाते. From tomorrow I will start, after 2 days, from Sunday I will start, this kind of activity they will say, but remaining they do not have any kind of things. Means they do not have any kind of determination. जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो प्लानिंग नहीं कर रहे होते हैं, but they have their imagination. उसकी एप्लीकेशन कोई नहीं आती. This is all about time management. Best of time we have different examples. One is communication, communication or gossip. Communication and gossip we have different, both are different terms. For communication, if we have discussion on facts and figures, professional, academic, productive discussion, this is communication we have. When we have discussion without any kind of learning, only ill talking,
Useless discussion. This one is gossip. 90% people spend at least an hour in gossip. 90% information in other country, they spend their time in gossip. At least 1 hour they spend in gossip. Useless activity. They do not accept this is their useless activity. They think that this is important for them. Go analyze. You will come to know that this is not a productive communication, rather than it is a gossip. In gossip, we have talking, backbiting, relevant criticism, useless debate. We have huge debate on religion, on politics, without any kind of knowledge. We support or we dislike, we like basis of no reason, no data, no justification. This one is debate. हमारी जो डिबेट्स होती हैं वो यूजलेस होती हैं. हमारे पास डेटा भी नहीं है, जस्टिफिकेशन भी नहीं है, रीजन लॉजिक भी नहीं है. हम डिस्कस करते हैं ऑन पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स. सेकेंड, वी हैव इल टॉकिंग अगेंस्ट आवर colleagues, against our classmates, against our friends, and we think that this is kind of joke or entertaining. Again, a gossip. People, they should avoid these kind of activities, or they should not participate in gossip. Rather, they must have communication. If they have communication, this is better for them. They will not waste their time. In last video, we discussed time management, a brief idea. Today, we discuss time management, one segment of time management, how to understand where we use our time uselessly, a waste of time. We have different segments of time management. One of them is a waste of time. Inshallah, in next video, we will discuss another topic. Thank you.